Hello. Good evening, students. Hi. This is Manisha from Sambalpur, Odisha once again. I know आप अभी बहुत बोर हो रहे होंगे घर में ड्यू टू द कोरोना वायरस एंड ऑल. आप बिल्कुल बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घर में ही आपको टाइम बिताना पड़ता है. आप कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाते हैं, आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आप इधर उधर घूमने नहीं जा सकते हैं. घर में पेरेंट्स आपको मना करते होंगे इधर उधर जाने के लिए. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग एट होम ओनली. आई नो दैट. ओके, बट स्टिल घर में रह के भी हम लोग बहुत कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं. हम लोग फ्यूचर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं. हम घर में कुछ मम्मी पापा को हेल्प कर सकते हैं, घर का काम सीख सकते हैं, जो कि हम लोग घर में मेरे के लिए हमारे पास जो टाइम नहीं हुआ करता था, अभी हम लोग वो घर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं. एज लाइक मी ऑल्सो आई एम गेटिंग बोर्ड एट होम एंड I would really enjoy to do this video for you people only, but yes, I really enjoy. Okay, previous video में हमने देखा था, I had discussed about that Lac Operon. I had given 3 videos about Lac Operon. In the first part, I had given the introduction for the Lac Operon, which was necessary. In the third video, I had started about the components of the Lac Operon, as you remember. So, what are the different components of Lac Operon? Let us revise it once again. I believe in revision. I believe in revision that if we revise something of the previous portion, definitely it gets revised once again, it gets repeated once again, and we can get back to the topic once again very easily. So that's why I believe in revision, and I think you people will slowly believe in revision too, because it gives a great help. That's why we need to revise everything, every subject, every topic of every chapter again and again. I think the revision हम जो रिविजन हम लोग बाद में करते हैं, वो रिविजन अगर हम लोग अभी पहले से कर देंगे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है. That I believe. Okay. So as you remember, जैसे आपको याद होगा, Lac Operon का components क्या क्या है? What are the different components of Lac Operon? What are they? First, regulator gene I, small I, regulator gene small I, promoter gene P, operator gene O, and structural genes Z, Y, and A. So what are the different components? First, regulator gene I, promoter gene P, operator gene O, and structural genes Z, Y, A. And I had also told that you cannot write the Z, Y, A in any sequence. Only this sequence should be followed. Z, Y, A ही लिखा जाता है, ना कि हम लोग Y, Z, A या फिर A, Z, Y करके लिख सकते हैं. We can only write Z, Y, A करके ही लिखा जाता है. Okay. और एक is सब स्टूडेंट्स थोड़ा बदर कर रहा होगा सब स्टूडेंट्स को कि आई एम नॉट हैविंग द वाइट बोर्ड नाउ. व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड व्हाटएवर मेरे पास नहीं है अभी. आई विल अरेंज इट सून फॉर यू पीपल ओनली. यस, आई विल डेफिनेटली अरेंज. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द प्रोसेस, बट स्टिल आपको अभी थोड़ा सा मैनेज करना होगा फॉर माई वीडियोज. आपको थोड़ा सा अरेंज करना ही होगा. आप एनसीईआरटी बुक से रिफ़र कर सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से रिफ़र कीजिए, या फिर आप ऑनलाइन भी कहीं PDF भी देख सकते हैं एनसीईआरटी का, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है. ओके, so what are the 3 structural genes Z, Y, A? ये 3 structural genes होता है. और जैसे कि मैंने पहले बोला था, what is the function of a gene? जीन का काम क्या होता है? What is the function? जीन codes for a protein. जीन एक प्रोटीन के लिए कोड करता है. हम लोग कब एक जीन को फंक्शनल बोलते हैं? When a gene is called functional. Whenever a gene codes for a protein, then only it is called a functional gene. तभी जाके वो जीन को फंक्शनल जीन बोला जाता है. जब एक जीन प्रोटीन के लिए कोड करता है तभी जाके वो फंक्शनल होता है. Otherwise it is not functional. It is coding. So enzymes are also proteins. As you remember, आपको याद होगा, enzymes are also proteins. Most of the enzymes are proteins only, except few enzymes. सिर्फ 1-2 एंजाइम को छोड़ के बाकी सब एंजाइम प्रोटीनेशियस होता है. सो वो 1-2 एंजाइम क्या है? वो 1-2 एंजाइम क्या है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस है, जो कि प्रोटीनेशियस नहीं है? One of the examples is ribozyme, peptidyl transferase,
One of the examples that which is non-proteinaceous, it is made up of RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड से जो बना होता है जो एंजाइम, वो है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज और राइबोजाइम. ओके, सो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स प्रोटीन को होता है. और what is the function of a gene? How can we say the gene is functional? Gene functional है कि नहीं है? जीन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जीन एक्सप्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाउ डू वी नो? Whenever a gene codes for a protein, जब एक जीन प्रोटीन के लिए कोड करता है तभी जाके उसको फंक्शनल बोला जाता है, तब बोला जाता है कि जीन एक्सप्रेस कर रहा है. What do you mean by gene expression? If the gene is coding for a protein, then only we can say the gene is coding. Gene is expressing, gene is regulating. Okay. So what is the function of a gene? Gene codes for a protein, and enzymes are proteinaceous, and the enzymes which I am going to discuss now, these enzymes are also proteinaceous. I told the example of the enzyme which is non-proteinaceous. It is ribozyme or peptidyl transferase. Ribozyme or peptidyl transferase. I would give the description of this ribozyme or peptidyl transferase in the description portion. Okay, so what is the function of this ribozyme or peptidyl transferase? It helps in peptide bond formation. This ribozyme or peptidyl transferase, it helps in peptide bond formation. And that peptide bond formation we'll discuss later. Okay, let me tell you what are the different enzymes coded by 3 structural genes. What are the 3 structural genes? Once again, 3 structural genes क्या क्या है? ZYA. These are the 3 structural genes. क्या क्या है? ZYA. And what are the enzymes they code for? Z codes for beta-galactosidase. Z codes for beta-galactosidase. Y codes for lactose permease, and A codes for trans-acetylase. Z codes for beta-galactosidase, Y codes for lactose permease, and A codes for trans-acetylase. These are the enzymes. These are the 3 enzymes coded by these 3 structural genes. Okay, so what are the different expected questions in NCERT that CBSE biology? CBSE biology board examination, what are the expected questions? I told you about the different components of the Lac Operon. What are the different components? First component is regulatory gene I. Second component is promoter gene P. Third component is operatory gene O. And last is structural genes Z, Y, A. Another indirect component, और एक जो indirect component होता है वो है inducer जो कि lactose होता है. Okay, तो ये lactose का काम क्या होता है? I'll tell you that later. Okay, once again, what do they code for? Structural genes किसके लिए कोड करते हैं? Z codes for beta-galactosidase, Y codes for lactose permease, and A codes for trans-acetylase. Okay, what are the different questions? जो क्वेश्चन जो आता है CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में वो है स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन कंडीशन. स्विच ऑन कंडीशन ऑफ लैक्टोज और लैक ऑपरेशन. स्विच ऑफ कंडीशन में लैक्टोज एब्सेंट रहता है, लैक्टोज इज एब्सेंट. स्विच ऑन कंडीशन में लैक्टोज प्रेजेंट रहता है. स्विच फर्स्ट, व्हाट आर द 2 cases? फर्स्ट इज स्विच ऑफ, सेकंड इज स्विच ऑन. स्विच ऑफ, लैक्टोज एब्सेंट. Switch on, lactose present. Okay, so what happens in switch off condition? Let me describe. Since I'm not having the whiteboard now, I won't be able to give that pictorial or diagrammatic representation of this Lac Operon. You just please refer the NCERT. That is better. That would be better for you. Let me describe the process. Okay. Before that, I would like to tell something about transcription. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? Simply saying, transcription, it is a formation of RNA from DNA. It is a process of formation of RNA, ribonucleic acid from DNA, and the portion of the DNA which leads to the formation of the RNA, that portion it is called transcription unit.
the portion of the DNA which leads to the formation of the RNA, that is called transcription unit, and it is having three components. There are three components of transcription unit. What are the three components? First is same promoter, second structural genes, third terminator. First promoter, second structural genes, and third is terminator. Okay, what is the enzyme responsible for transcription? ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम क्या होता है? ओके, वंस अगेन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द process of formation of RNA from DNA, actually from one strand of DNA. And what is the transcription unit? It is a portion of the DNA which leads to the formation of the RNA, and transcription unit is made up of three parts. What are the three parts? Promoter, structural genes, and terminator. Okay, then I was telling what is the enzyme for transcription. The enzyme is DNA dependent RNA polymerase. The enzyme for transcription is DNA dependent RNA polymerase. And one thing I would like to mention here, because I repeat it once again, I am unable to describe it diagrammatically. I'm not having the whiteboard now, but I will arrange the whiteboard soon. So please be patient, students. So what is the enzyme? DNA dependent RNA polymerase. And what are the three steps of transcription? ट्रांसक्रिप्शन का तीन स्टेप क्या होता है? What are the three steps? Initiation, elongation, and termination. Initiation, elongation, and termination. And one thing I would like to mention, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वही पोर्शन ही आरएनए बनेगा डीएनए से, सो जब तक एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब तक प्रोमोटर रीजन में बाइंड नहीं करता है तब तक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होता है. एंड दिस लैक ऑपरेंट, व्हाट इज द लैक ऑपरेंट अबाउट? इट इज अ लेवल ऑफ रेगुलेशन इन द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. लैक ऑपरेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ रेगुलेशन है. सो हियर वी आर अबाउट टू से कि ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं होगा. अगर होता है कौन से कंडीशन में होता है, अगर नहीं होता है कौन से कंडीशन में नहीं होता है. सो देयर आर टू केसेस आई टोल्ड. व्हाट आर द टू केसेस? स्विच ऑफ and switch on. Switch off, lactose absent. Switch on, lactose present. So what I was about to tell कि मैंने जो बताया आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मैंने आपको बताया तीन स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है. इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का तीन पार्ट होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर. सो ये सब का लैक ऑपरेंट से क्या लिंक है? लैक ऑपरेंट जो है वो किसका लेवल ऑफ रेगुलेशन है? वो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल ऑफ रेगुलेशन होता है. तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कब होगा और ट्रांसक्रिप्शन कब नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन जो है ट्रांसक्रिप्शन के बाद ही होता है. पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा फिर जाके ट्रांसलेशन होता है. सो ट्रांसक्रिप्शन कब होगा और ट्रांसक्रिप्शन कब नहीं होगा, दैट वी आर अबाउट टू डिस्क्राइब. तो मैंने बोला आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम क्या होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन? That is DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का तीन पार्ट होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, टर्मिनेटर. वो तीन पार्ट ही, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, टर्मिनेटर, वो तीन पार्ट ही पूरा होल आरएनए बनता है. प्रोमोटर से स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर में एंड होता है. ट्रांसक्रिप्शन का तीन प्रोसेस होता है. इनिशिएशन तीन स्टेप होता है, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन का तीन स्टेप है. इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन. ये तीन स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है. जब एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब प्रोमोटर रीजन में बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का प्रोमोटर रीजन में जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, व्हेन इट बाइंड्स देन ओनली ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस. तब जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. स्ट्रक्चरल जीन में इलोंगेशन होगा और जब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब टर्मिनेटर रीजन में पहुंचेगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, तब टर्मिनेशन होता है. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का टर्मिनेशन होगा. देन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट्स. आई थिंक यू वुड फॉलोड, आपको समझ में आया होगा. व्हेन द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द promoter region of the transcription unit, initiation occurs. Until DNA dependent RNA polymerase binds to promoter region of transcription unit, transcription doesn't start. Transcription doesn't start at all. Start ही नहीं होता है. Transcription start ही नहीं होगा. तो
ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन में बाइंड होना चाहिए. Okay, so lac operon, it is which level of regulation? I told you it is transcriptional level of regulation. Transcription level of regulation होता है. तो कौन सी कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, कौन सी कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है? ऑफ कोर्स दैट स्विच ऑफ स्विच ऑन जो है उसे से हम लोग गैस कर सकते हैं. स्विच ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, स्विच ऑन ट्रांसक्रिप्शन होता है. स्विच ऑफ लैक्टोज इज एब्सेंट, स्विच ऑन lactose is present. Switch off, transcription would not take place, so translation would not take place. So the three enzymes, beta-galactosidase, lactose permease and trans-acetylase, these are not produced. Switch on में क्या होता है? Lactose is present, so transcription would take place, translation would take place, and the three enzymes. What are the three enzymes? Beta-galactosidase, lactose permease, and trans-acetylase. These three enzymes are produced. So let me tell what happens in switch off condition when the lactose is absent. Let us start with the components. Regulator gene I, promoter gene P, operator gene O, structural genes Z, Y, A. So what happens? First, regulator gene I. Regulator gene I codes for a protein called repressor protein. Repressor, REPRESSOR, repressor protein. Regulator gene I codes for a protein called repressor protein. This repressor protein has a tendency to bind to the promoter operator region. The regulator gene, I am describing the switch off condition. The regulator gene I produces a protein called repressor protein, which has a tendency to bind to promoter operator region. So just tell me, just ask yourself, because I cannot ask you now. I'm unable to contact you. Okay, just ask yourself and tell yourself, okay, that if the repressor protein binds to promoter operator region, will there be space left for the binding of the DNA dependent RNA polymerase? No. Just think about it once. The regulator gene I, because it is a gene, it would code for a protein, वो एक protein produce करेगा. The regulator gene I codes for a protein that is repressor protein. This repressor protein has a tendency to bind to promoter operator region, and as I have already told you, मैंने आपको बोला था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का प्रोमोटर रीजन में जब तक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड नहीं होता है तब तक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट ही नहीं होता है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन प्रोसेस ही नहीं होगा. So just think about it once. If the repressor protein binds to the promoter operator region, will there be space left for the binding of the DNA dependent RNA polymerase? No, there is no space left for the binding of DNA dependent RNA polymerase. If there is no binding of DNA dependent RNA polymerase in the promoter region, there won't be transcription, there won't be translation, and the three enzymes, beta-galactosidase, lactose permease, and trans-acetylase, these are not produced. Okay. I think you must have followed. Switch off, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. कैसे नहीं होगा ट्रांसक्रिप्शन और क्यों नहीं होगा? ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए कंडीशन क्या है? What is the condition for transcription to start? What is the condition? Which enzyme should bind to the promoter region? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. जब रिप्रेशर प्रोटीन जाके बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन में, तब बाइंड कर पाएगा क्या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? नहीं बाइंड कर पाएगा. नहीं बाइंड किया मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा. ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो सेंट्रल डॉगमा के जो प्रोसेस है, what is the central dogma? The flow of genetic information from DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translation. ये नहीं हो पाएगा. ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो ट्रांसलेशन नहीं होगा. ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस. तो तीन एंजाइम जो कि प्रोटीन है, यहाँ पर प्रोटीन है, वो प्रोड्यूस नहीं होगा. The three enzymes are not produced. So this is switch off condition. So what are the three
सो व्हाट हैपेंस स्विच ऑफ कंडीशन, और स्विच ऑफ कंडीशन में क्या एब्सेंट रहता है? लैक्टोज इज एब्सेंट. Students, as I won't be able to get your answers, to get your views, to get your understanding here in this video properly, so please I request you, please do let me know that how much you understood, because see, I'm having some voice disorder, as I've already told you, that spasmodic dysphonia. So because of that, some breaks, that breathing problem, all these things occur, but still I think you would be able to get, if you get acquainted with me, if you get acquainted with me properly, I think you would be able to get and you will be able to understand very easily, as I believe. But still, if you face some queries, you can ask me in the comment section. Please don't hesitate to share your comments. You are freely welcome. You're welcome. Don't hesitate. I'm waiting for your comments. Just let me tell you very frankly, I'm really waiting for your comments. Okay. So switch off. We finished. Switch off condition. Once again, let me tell you. Once again, briefly, I'm telling, because after that you will be able to get that switch on condition very easily. Okay. So what happens in switch of condition? The regulatory gene I produces a protein called repressor protein. The regulatory gene I produces a protein called repressor protein. Remember, you can see the NCERT book. You can refer the NCERT book properly, because I'm unable to draw the diagram. Otherwise, I would have given much better explanation for this. Okay. See, किस तरह से अरेंज रहता है? फर्स्ट पहले रहता है रिप्रेशर प्रोटीन, उसके बाद रहता है सबसे पहले रहेगा रेगुलेटरी जीन आई, फिर रहेगा प्रोमोटर जीन पी, फिर रहेगा ऑपरेटरी जीन ओ, फिर रहता है 3 स्ट्रक्चरल जीन जेड वाई ए. ये 3 रहता है. सबसे पहले रेगुलेटरी जीन आई, फिर है प्रोमोटर जीन पी, फिर है ऑपरेटर जीन ओ, फिर रहता है स्ट्रक्चरल जीन जो है वही सीक्वेंस में ही रहेगा. डोंट फॉरगेट दैट. जेड वाई ए, ये सीक्वेंस में रहता है. ओके. तो regulatory gene I, it produces a protein called repressor protein. Regulatory gene I produces a protein called repressor protein, which has a tendency. This is the distribution. You can easily remember this. I think you will remember, and please do let me know whether you are able to remember or not in the comment section. Please do let me know. I am eagerly waiting for your response. Please, all of you all are welcome. Okay. The regulatory gene I produces a protein called repressor protein, which has a tendency to bind to promoter operator region. The regulatory gene I produces a protein called repressor protein, which has a tendency to bind to promoter operator region. So there is no space left for the binding of which enzyme? DNA dependent RNA polymerase. So there is no space left for the binding of DNA dependent RNA polymerase. So what happens? Will there be transcription? Transcription start हो पाएगा क्या? Start ही नहीं होगा तो खत्म कैसे होगा? Translation कैसे होगा? Enzyme कैसे produce होगा? So there is no transcription. There is no translation. Their enzymes are not produced. It is very easy. I think you must have got. The regulatory gene I produces a protein called repressor protein, which has a tendency to bind to promoter operator region. So there is no space left for the binding of DNA dependent RNA polymerase. So there is no transcription, no translation, enzymes are not produced. So this finishes switch off condition. It is lactose is absent in this condition, switch off condition. Okay. Next, switch on. Lactose is present. What happens if the lactose is present in the medium? Switch on. Lactose अगर मीडियम में प्रेजेंट होगा तो ऐसा क्या अलग हो जाएगा जो कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा, फिर एंजाइम भी प्रोड्यूस हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा? अच्छा, कौन सा एंजाइम बाइंड, कहाँ पर बाइंड करने से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, होता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब प्रोमोटर रीजन में बाइंड करता है
तब ट्रांसक्रिप्शन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन फॉलो होगा, फिर 3 एंजाइम प्रोड्यूस होता है। ओके, तो क्या बाइंड कर जाने से प्रोमोटर रीजन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता है? ऐसा क्या बाइंड करता है जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को रोकता है बाइंड करने से प्रोमोटर रीजन में? रिप्रेशर प्रोटीन कोडेड बाय प्रोड्यूस्ड बाय रेगुलेटर जीन आई। रेगुलेटर जीन आई जो रिप्रेशर प्रोटीन कोड करता है, वो जब जाके प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाता है, तब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आके वहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं करने से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होता है। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है, क्या करने से ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा? रिप्रेशर प्रोटीन को रोकना पड़ेगा। रिप्रेशर प्रोटीन को जब रोक लेंगे तब जाके वो बाइंड नहीं कर पाएगा प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन में, तब जाके ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, क्योंकि स्पेस बचेगा। वो जगह बचेगा किसका बाइंडिंग के लिए? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग के लिए। Isn't it? I think you must have got now what's the answer. okay. तो क्या करेंगे? लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा। स्विच ऑन कंडीशन में लैक्टोज प्रेजेंट रहता है मीडियम में, तो लैक्टोज प्रेजेंट रहने से क्या होगा? ओके, द रेगुलेटर जीन आई प्रोड्यूसेस ए प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेशर प्रोटीन। If lactose is present in the medium, it would bind to repressor protein and inactivate it. The regulator gene I जैसे प्रोड्यूस करता है रिप्रेशर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। अगर लैक्टोज होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है? मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, कैसे डिसाइड हो रहा है? जस्ट सी दिस प्रॉपर्ली। The regulator gene I produces a protein called repressor protein. If lactose is present in the medium, what happens? If lactose is present in the medium, it would bind to what? It would bind to repressor protein and inactivate it. उसको inactivate कर देगा. It would bind to repressor protein and it would inactivate it such that it is unable to bind to promoter operator region. The regulatory gene I produces a protein called repressor protein. If lactose is present in the medium, it would bind to repressor protein and inactivate it such that it is unable to bind to promoter operator region. So what happens? तो अगर repressor protein promoter operator region में bind नहीं करता है तो क्या होगा? स्पेस बचेगा कि नहीं बचेगा? किसके लिए स्पेस बचेगा? For the binding of which enzyme? DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase enzyme वहां पर जाके आराम से bind कर पाएगा, क्योंकि repressor protein bind नहीं किया। तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, फिर 3 एंजाइम भी प्रोड्यूस होगा। आई थिंक मस्ट हैव फॉलोड। इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी। स्विच ऑफ अगर हो जाता है, स्विच ऑन, इट इज वेरी इजी। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, सॉरी। द रेगुलेटर जीन आई प्रोड्यूसेस ए प्रोटीन called repressor protein which has a tendency to bind to repressor protein. If lactose is present in the medium, what happens? If lactose is present in the medium, it will bind to repressor protein and inactivate it. It would bind to repressor protein and inactivate it such that it is unable to bind to promoter operator region. So what happens? So there is space left. For the binding of DNA dependent RNA polymerase. So what happens? Transcription would take place, translation would take place, and 3 enzymes. What are the 3 enzymes? I think you must have remembered. Yeah, I have repeated many times. What are the 3 enzymes? What are they? Beta galactosidase coded by Z. Lactose permease coded by Y. And third, trans-acetylase coded by A. Z codes for beta galactosidase, Y codes for lactose permease, and A codes for trans-acetylase. अच्छा, बोर्ड तो नहीं लिख रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, आधा घंटा हो गया।
थोड़ा बोर लग रहा होगा जो, क्या करें बता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है लेकिन डिफिकल्ट लगता है। बाहर से देखोगे लैक ऑपरेन बड़ा बोलते हैं ऐसे बच्चे कि हाँ लैक ऑपरेन है, पता नहीं, बिल्कुल नहीं समझ में आया है, बहुत डिफिकल्ट था मैडम, नहीं आ रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर का टॉपिक है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या है, भगवान जाने। थोड़ा सा तो समझ में आया होगा अभी, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आ गया होगा, 70% आ गया होगा तो बड़ा खुशी होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज बताइए मुझे कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में पक्का बता गया, रियली eagerly waiting for it. Okay, let me repeat that. Switch on if lactose is present in the medium. The regulatory gene I produces a protein called repressor protein. If lactose is present in the medium, what happens? It would bind to repressor protein and inactivate it, such that it is unable, switch off condition में bind कर पाता था, switch on condition में bind नहीं कर पाएगा, such that it is unable to bind to promoter operator region. So what happens? There is space left, वहाँ पर space नहीं बचा था, there was no space left in the which condition? Switch off condition. Here it is space left, switch on condition. Space left for the binding of which enzyme? DNA dependent RNA polymerase. So transcription would take place, translation would take place, and 3 enzymes are produced. So this is very, 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 very important long question in CBSE biology board examination. I think you've got it. Must have got it. Okay. After this, switch off, switch on, we did it. I've already told the components. Okay. Let me remind you once again that what is the only non-proteinaceous enzyme? Not only, one other enzyme is also there. Very few, very rare, only 1 or 2 non-proteinaceous enzymes are there. One of them is this peptidyl transferase or transferase or ribozyme, ribozyme. Ribozyme. It is the only non-proteinaceous, and as I told this further because enzymes are proteins, and this is one of the enzymes what is non-proteinaceous, which is non-proteinaceous. Okay. Okay. After this, another very important question which comes from this question Lac Operon, that is it. What are the functions of these enzymes? The functions of only 2 enzymes have been given in NCERT. I would add the third one also later. First Z codes for beta-galactosidase. Beta-galactosidase, the function of the beta-galactosidase, it brings about the hydrolysis. It brings about the hydrolysis of lactose to form. I already told about the lactose. It is made up of which sugars? Glucose and galactose. Beta-galactosidase brings about the hydrolysis of lactose to form glucose and galactose. Glucose and galactose. Could you follow? Okay. Once again, I'm repeating. Beta-galactosidase brings about the hydrolysis of lactose to form glucose and galactose. Okay. Next, lactose permease. Lactose permease, its function is it allows the entry. It permits the entry of beta-galactosidase into the cell. Lactose permease, it permits the entry of the beta-galactosidase into the cell. Okay, which cell? Prokaryotic or eukaryotic? What do you think? ये स्टार्टिंग में बताया था मैंने, आपने अगर वीडियो देखा है तो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा. विच सेल आई मीन हियर, विच सेल का मतलब मैं पूछ रही हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की यूकैरियोटिक सेल. ये एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल का है. बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरियम के अंदर हो रहा है ये वाला? E. coli, Escherichia coli. Okay. So what are the functions of the first 2 enzymes? Beta enzyme, what is function? Beta-galactosidase, what is function? It brings about the hydrolysis of the lactose. It brings about the hydrolysis of the lactose to form glucose and galactose. Okay.
Next, lactose permease. It permits the entry of beta galactosidase into the cell. It permits the entry of beta galactosidase into the cell. Okay, so this is another question. So who had proposed the Operon concept? I had told in the beginning, Francois Jacob and Jacques Monod. Francois Jacob and Jacques Monod, these two scientists had proposed the Operon concept. Okay, this is one question. Another question is switch off, switch on condition. It's very, very important. What are the three enzymes coded by Z by A? It is also very important question. Another question, components of Lac Operon. Simply it also comes, what are the components of Lac Operon? This also comes. Okay, so once again, what are the first very beginning question, who had proposed the Operon concept? Second, switch off, describe the switch off, switch on condition. Third, once again, what are the components of Lac Operon, and what are the different enzymes coded by structural genes? This is also another separate question. And what are the functions of that enzymes, beta galactosidase and lactose permease? The functions of these two enzymes have been given in NCERT. The function of trans-acetylase has not been given in NCERT. That CBSE class 12th NCERT book. Okay, besides this, another very important question comes, give examples of Operon other than Lac Operon. Give some examples of Operon other than Lac Operon. So what are the different other examples? Lac for lactose, actually it is lactose operon, then ara operon, arabinose operon. Third, well operon, veline operon. First, Lac Operon. Besides Lac Operon, to give the example, first or arabinose operon. Second, well or veline operon. Third, his or histidine operon. Fourth, tryptophan operon. So what are the, besides Lac Operon, what are the first, era or arabinose operon. Next, what is the next? That VAL, veline, well or veline operon. Next, his or histidine operon. Next, tryptophan operon. So these are the, what are the examples of operon other than the Lac Operon? Once again, era or arabinose operon, well or veline operon, his or histidine operon. Fourth, what is the fourth one? Unable, trip or tryptophan operon. Okay, so this completes my video today. I would be really waiting for your comments. Please do let me know. And one more thing I would like to tell, in the beginning I was facing a lot of breathing problem. You must be knowing from my voice was not much clearer. That's true. But students, as you would be acquainted with me, as you know me properly, that what are my problems, what are my strengths and all, you would be definitely able to cooperate. I can promise very good marks. So please do subscribe my channel. I would be really happy. I would be more than happy, and I would remain in contact with you always. You can ask me doubts also. I would make the provisions for that also later. And one more thing, I know that some students must have followed very easily and some must not have followed, but halfway they would have followed. क्या करें बताओ, अभी मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है. व्हाइट बोर्ड जब आ जाएगा तो और इजी हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मच बेटर समझ में आएगा. जब व्हाइट बोर्ड आएगा तो और इजी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, आपको और इजीली समझ में आएगा. स्विच ऑफ, स्विच ऑन कंडीशन मुझे लगता है आपको समझ में आया है. आई रियली फील आपको कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली समझ में आए. 60-70% आपको समझ में आ गया होगा. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग बिफोर लीविंग, स्विच ऑफ.
The regulatory gene I produces a protein called repressor protein, which has a tendency to bind to promoter operator region. So there is no space left for the binding of DNA-dependent RNA polymerase. So there is no transcription, there is no translation. 3 enzymes are not produced. Okay, switch on, lactose is absent. Switch off, lactose is present. Switch off, lactose is absent. Switch on, lactose is present. Switch on. The regulatory gene I produces a protein called repressor protein. If lactose is present in the medium, what happens? Lactose binds to repressor protein and inactivate it such that it is unable to bind to promoter operator region. So what happens? There is space left क्योंकि repressor bind नहीं कर पाएगा. So there is space left for the binding of DNA dependent RNA polymerase. So there would be transcription, there is translation, and 3 enzymes, beta-galactosidase, lactose permease, and trans-acetylase are produced. What are the examples of operon other than Lac Operon? First, era or arabinose operon, well or veline operon, his or histidine operon. Last, what is that? Trip or tryptophan operon. Thank you so much. Please like, share, comment, and subscribe my channel to have much more fun. We will have much more fun. We'll make the learning very enjoyable. So please cooperate. Bye. Good night.